सपना ही जी लिंक आहे याला YouTube वर खाली पेस्ट करशील. ठीक आहे. ही आता मॅडमनी जी पाठवली ना. So Rossana, just stress that there's also people following the lecture over YouTube because sometimes people are following it on their mobile devices. And so there will be questions coming in from there that Nilesh and Subodh will mediate and moderate. Yes. Okay, thanks. Okay, so we can begin. Shall we begin, Nilesh? Rossana, Please. ma'am? Yes. Shall we begin? Yes. Okay. Hello, welcome to Digital Nalanda. ये Digital Nalanda का special session है जिसे हम कहते हैं curiosity lectures, and this is the 9th lecture in the series where we have an expert, eminent expert from the field of network science. We welcome Dr. Rossana Mastrandrea, and a brief intro about her. She is assistant professor in the Department of Management at University of Torino. Before that, she was an assistant professor and research scholar at IMT School of Advanced Studies. She did her PhD in economics from St. Anna School of Advanced Studies, Pisa, and master degree in mathematics applied to finance from University of Bari. हम हमारे साथ जुड़े जो लोग हैं YouTube पर और हमारे साथ जुड़े जो Zoom पर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क साइंस के ऊपर हमारी एक्सपर्ट से वो रूबरू हो, एंड हम उनके ज्ञान से और उनके आज के प्रेजेंटेशन से हम अपना ज्ञान लाभ करवा दें. सो ओवर टू यू, डॉक्टर रोसाना. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. Good afternoon. I'm very happy to be here and to join, to have the opportunity to contribute to these lectures. I'm Rossana Mastrandrea. I'm a mathematician, really interested in complex systems and network theory. And application in different kind of fields. So with this lecture, I want to show you how powerful networks are, and how complex systems and networks surround us and are present in our reality. For this reason, I want to start with this video, with a short movie, sorry.
Okay, so I decided to start with this movie because I think it's a very nice, beautiful example of what a complex system is. And it's very fascinating. This is called marmoration. And this effect of having all these birds in a certain way synchronizing and forming, creating this giant new element. And this is in fact the main features of complex systems. A complex system is a system made up of many identical elements, so that share exactly the same properties, behaving in the same way, but such that their interaction create something new, which is not simply the sum of all these parts, but something that has its own property. And so this is emergent properties that characterize complex system. I like in this sense this quote from Anderson, which highlights that more is different. It's not simply the set of many things, but is something new. What happens in this specific case of birds? Why we can consider this murmuration effect as a complex system? Because birds are all identical, are exactly the same kind of birds that behave in the same way and do not communicate. So what we are observing is the effect of their interaction. But in which sense? The bird just follow some very simple rules that are they tend to align to the other birds in order to follow all the same direction and don't touch each other. And for the same reason, there is a sort of repulsion pushing them close but apart in order to not touch one the other. They try to stay also cohesive, so close enough in order to protect themselves from predators. So the combination of these rules, so align, be cohesive, and separated from the other, generate exactly what we observed. And here you can find a simulation that we realized with the NetLogo, where each triangle represents a bird. Of course, they are closed in a closed rectangle of course, because we are showing this in a screen. And so each bird in this algorithm satisfy exactly these three properties. You see, we start from a random placing of this bird, and very soon they start to create a group that are close and follow the same direction and the same rules. And this is exactly what we observed in the movie I showed you before about murmuration. I stop here. तो शुरुआत में ही जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया, हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए मैंने पहले एक मूवी दिखाई आपको। उस मूवी में बेसिकली जैसे चिड़ियों का ये जो झुंड होता है या फ्लॉक ऑफ बर्ड जिसको कहते हैं, उसके आपने देखे बहुत खूबसूरत से पैटर्न बन रहे होते हैं। वो एक साथ उड़ तो रहे होते हैं, लेकिन एक पैटर्न बना के एक तरह से एक बहुत खूबसूरत सा उसका एक फ्रेम बना के वो उड़ रहे हो। तो ये किस तरह इसको हम, इसका क्या साइंस है, ये हम इसको किस तरह हम देखें, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें होता यह है कि एक जैसे ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बर्ड्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं और वो इस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। देखिए बर्ड्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब उस इंटरैक्शन का इस कदर उसका प्रभाव है कि वो भले ही रैंडम एक दूसरे से रहे हो, अलग उनकी वो फ्लाइट हो या कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से वो धीरे धीरे एक पैटर्न में वो तब्दील होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का जो मैम ने बताया कि ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी एक जैसे एलिमेंट्स के मिलकर बनता है, लेकिन वो मिलकर कुछ नया चीज तैयार कर रहे होते हैं
जो कि उसका सम नहीं है, मतलब जोड़ नहीं है, वो जोड़ से भी ज्यादा चीज है। और इसको मैंने बताया बर्ड्स का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें उन्होंने बताया कि अलाइनमेंट, कोहेशन, रिपल्जन और सेपरेशन, इस तत्व पे, इन चारों तत्व पे मैम ने बताया। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. Earlier slide. Where we have cohesion, alignment and all. You want, okay, this. Yeah, before, yeah, this one. So यहाँ आप देख रहे हैं अलाइनमेंट। तो इस तरह से जैसे बर्ड्स जो है एक दूसरे से अलाइन होते हैं, पर एकदम भी टच नहीं करते एक दूसरे से। और इस तरह से आप एक दूसरे को वो एक साथ जुड़े रहते हैं कोहेशन में, ताकि जो बाहर का जो अटैक होता है उनसे वो प्रोटेक्टेड। रिपल्जन, एकदम भी क्लोज नहीं आना और उससे थोड़ा सा वो दूरी बना के रहना। और सेपरेशन, जिससे वो धारा उनकी तैयार होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो मैम नेक्स्ट स्लाइड। सो इससे ये अभी मैम ने ये पैटर्न्स बताए हैं, जिस तरह से ये रैंडमली उड़ते हुए बर्ड्स धीरे धीरे करके, देखिए, एक पैटर्न धीरे धीरे आपस में अपनी इंटरेक्शन से ये बनाना शुरू करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का ये बहुत यूनिक एग्जांपल मैम ने बताया। यस मैम। Okay, thanks. But what is the relation between complex systems and networks? Because this is the main topic of these lectures. Networks are simply the mathematical tool that allow to model complex systems and to study the properties. So these emergent properties, these something new that we are observing. Because as I said, the two elements of these complex systems are identical elements and interaction. Of course, interaction, as you can imagine, is the simplest interaction that you can imagine, is a communication among peoples, no? So people that interact. But there are very, very other different way to elements to interact. And the networks allow to properly represent this. How? So what is a network? I'm just showing some pictures of what you can have in mind of networks that are related with the network as a mathematical tools in terms of structures. Why? Because a network is simply a set of points and lines. So the points that are called nodes are exactly the elements identical. So in our example, birds. While the links that are represented by graphical lines are the interaction. So a link between two nodes exists if the two nodes somehow interact. So they communicate, they are, like in the bird, close enough to put in actions their alignment or separation or repulsion. It doesn't matter the length of this line, the color of this line, the exact position of nodes. And this I will show you soon. What matters is the number of these nodes and the number of these links. There are different shapes that a network can have according to a regular or not position of nodes and links. So on the left we have the most regular network, which is a grid, when you have some physical constraint that force your node to be there. In the middle, we have a random network, which usually represent, for example, random meetings that people have during the day. And on the right, we have the scale-free network. It's a network characterized by few nodes having many, many contacts, and you can see these nodes surrounded by other nodes, and many nodes having just one contact, so one connection, and being in the periphery. A typical example of a scale-free network is a social network. Imagine Facebook, Instagram, or X. You have influencers that are hubs, while all the other people have very, very few connections.
This is a real example of a network that I draw after collecting data on friendship in high school. Here, color represents the different classes. Links represents the existence of a friendship relationship. So as you can see, people that belong to the same class tend to have more relationship. But there are also relationships, so links, lines, connecting node belonging to different classes. So the network can have a very different shape according to the specific complex system that is representing. तो जैसे इसके पहले मैम ने बताया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो है, तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है, एक एक गणित का टूल है जिससे हम इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो जैसे अपने बर्ड का देखा, बर्ड के जैसे ही अन्य भी ऐसे नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं जिनको आपने कागज पे उतारना होता है कि वो किस तरह कनेक्टेड है और किस तरह वो रिलेटेड है। तो नेटवर्क्स जो है वो एक इस तरह का टूल है जो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को। और उसमें बेसिकली मैम ने बताया क्या होता है। वो बेसिकली रहते हैं दो इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, एक पॉइंट होता है या नोड जिसको कहते हैं, और लाइंस होते हैं यानी जो कनेक्ट करते हैं। तो हमको मैंने बताया किस तरह नोड्स और लाइंस इनको मिला के या इनकी जोड़ तोड़ इनका जो जुड़ाव होता है वो एक नेटवर्क को जन्म देता है। और जब हम आगे जब इसके एग्जाम्पल में गए, मैम ने बताया कि रेगुलर ग्रिड था जहां पर नोड्स थे, बहुत सारे नोड्स होते हैं और वो रेगुलर शेप में, एक जिसको हम कहते हैं स्क्वेरिश शेप में थे। दूसरा एग्जांपल एक रैंडम नेटवर्क था जिसमें नोड्स और लाइंस का देखिए एक तरह से एक बहुत रैंडम सा कनेक्शन था। और तीसरा मैम ने बताया स्केल फ्री नेटवर्क जहाँ पे नोड्स जो है वो कम है और वहां पर जो कनेक्शंस है, जो लाइंस है वो ज्यादा है। तो उसका एक एग्जांपल जो था, जैसे आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया में जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो एक नोड हो गए, और जो फॉलोअर्स हो गए हैं तो नोड से लेकर फॉलोअर तक जो लाइंस कनेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम स्केल फ्री नेटवर्क का हम एग्जांपल देखते हैं। तो मैम का एक रिसर्च का एक रहा है जो उन्होंने एक फ्रेंच हाई स्कूल में फ्रेंडशिप का नेटवर्क कैसे तैयार होता है उस पर एक ग्राफ बनाया। तो आप नीचे देख सकते हैं वो जो ग्राफ है उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि एक वर्ग जो है, एक लगभग एक वर्ग के दोस्त लोग जो है वो ज्यादा दोस्ती करते हैं, लेकिन इनमें भी आपस में भी जुड़ाव है, कुछ कुछ यहाँ पे लाइंस कनेक्ट हो रही है, दो वर्गों के बीच में भी कुछ कुछ जुड़ाव है, लेकिन प्रमुखता से अलग अलग वर्ग अपने अपने वर्ग वालों के साथ ही यहाँ पर दोस्ती करके दिख रहे हैं। लेकिन इसमें अपवाद कुछ ऐसे कनेक्शन मिल रहे हैं जो अपने क्लास को ब्रेक करते हुए दूसरे क्लास के या दूसरे वर्ग के लोगों से भी मैत्री या दोस्ती कर रहे हैं। यस मैम। Okay, for example, here I'm showing the same nodes, so those are the students of the French school, and different kind of network. The number of nodes changes because it depends if people allow to decide to participate to the survey or not. But just to show that on the left side we have contact network, so the network that we built through some wearable proximity sensors. And so you see it's very, very dense network because at least once we can say all students met each other. While in the middle we have friendship network, what I define offline friendship network, and on the right online Facebook network. And you know, we also have Facebook friends that we don't know very well. So just to show how the same nodes can have different structures. But as I said, I want to also show to mention some examples to let you understand how networks surround us. Let's imagine, for example, as nodes, now cities.
What are connections? Connection can be roads, so we have the network of roads connecting cities. Can be flights, so we have the network of airports belonging to that city, if there are, of course. We can have railways. All of these are different kind of networks that describe the same set of nodes. Then we can have a network of banks, of economic institutions, a network of proteins that are connected by the kind of interactions. We can have also a network of people that are very, very important to study, for example, the diffusion of epidemics. And for example, in this case, high school is a very important example because what matters in epidemic diffusion are people and how many time they spend with each other. Who are in this kind of network nodes that are very dangerous because are considered super spreaders. At least in the Italian school, teachers move from one class to the other during one day. So teachers are considering super spreaders. So if a country has to start a vaccination campaign, but also keep lower cost, it can decide to start from teachers for exactly this reason. So this is just few examples of what we can do with networks. So I want to I want to show now how graph theory was born. So what is considered the birth of graph theory? And I start with this paint that represents the Königsberg bridges. There is this legend, but there is something true in this legend because it's the birth of network theory. There was this city surrounded by waters. So at the end, this city was made up by three parts connected through 7 bridges. And so at a certain point, someone started to ask, but there is a way to go through the city, so to touch the 3 parts of the city, but passing only once through each bridge, so traversing each bridge only once. This city exists, and nowadays is called Kaliningrad. I'm showing this you on Google Earth. Of course, we don't have exactly the same shape as before. The 7 bridges are not all there because one was destroyed during the war, another one rebuilt. But this is to show that there is a true story inside. Indeed, it seems that someone asked to Euler, that was a famous mathematician of the period. We are in 1736, more or less. And at the beginning, Euler said that the problem was too silly, too trivial. At certain point, he realized that he could not solve it using the standard mathematics tool, so algebra, geometry, and so far and so on. And so finally, he decided to focus on this problem. And we will see what happened. I stop here. तो मैम ने इसके पहले ग्राफ थ्योरी में जाने के पहले मैम ने बताया कि कुछ एग्जांपल्स दिए मैम प्रीवियस 2 स्लाइड्स। तो बिफोर दिस तो ये एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे नेटवर्क के एग्जांपल दिए। अब ये जो है कॉन्टैक्ट नेटवर्क है, ये हमारे कॉन्टैक्ट के नेटवर्क है जो एक दूसरे के रिलेशन में या एक दूसरे की इंटरैक्शन में बने होते हैं। दोस्ती का नेटवर्क जैसा होता है, जैसे कांटेक्ट आपके बहुत लोगों से होते हैं, लेकिन दोस्ती जो है वो आपके बहुत कम लोगों से होती है। तो उसका नेटवर्क का हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखिए, और फेसबुक का देखिए वो उससे थोड़ा ज्यादा है। सेम नोड्स के लिए आप देखिए इनका शेप कैसा चेंज होता है।
तो ये इसलिए भी है कि फ्रेंडशिप जो है आपकी रियल बहुत कम लोगों से, फेसबुक पर आप ऐसे लोगों से भी दोस्त होते हैं जो आपके शायद आप उनसे कभी मिले नहीं। तो ये जो साइज है, अ, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो डिपेंड्स अपॉन आपका जो उनसे क्या नेटवर्क है, उनसे क्या कनेक्शन है, उस बेस पे ये तैयार हो रहे हैं। अब कनेक्शंस जो है, कनेक्शन का मैम ने एग्जांपल बताया कि कनेक्शन किस तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं किस तरह के होते हैं। तो एक बेसिक जो मैम ने बताया कि आपकी बस है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट ये माध्यम है, वो है। लोग, बेसिकली लोग जो है, जैसे किसी अभी जैसे कोविड-19 हुआ, एपिडेमिक हुआ, तो उस दौरान जो था लोग, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कनेक्शन हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी अगर कोई स्कूल का एग्जाम्पल ले ले, तो वहाँ एक दूसरे के साथ समय बिताने वाले बच्चे तो ज्यादा होते ही है, लेकिन अगर समझो वहाँ किसी जगह एपिडेमिक हुआ, तो उसको स्प्रेड करने वाला व्यक्ति जो रहेगा वो बेसिकली टीचर रहेगा। तो टीचर ये माध्यम हुआ स्प्रेड करने का, सुपर स्प्रेडर का। तो ये एग्जाम्पल्स हमको मजबूर करते, या ये सोचने पे मजबूर करते कि ये ऐसा कुछ नेटवर्क है, इसको हमने जानना जरूरी है। तो मैम मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो मैम हमको ग्राफ थ्योरी पर ले जाने के पहले उसकी जो एक बेस है, उस पर ले जाती है, जिसको मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, कॉनिग्सबर्ग ब्रिजेस जो है, उसमें एक लेजेंड है उसका, ये एक उनकी बहुत फेमस कहानी है, जहाँ पे ये पानी से घिरा हुआ शहर था, और उसमें ये जो ब्रिजेस थे, इन ब्रिजेस के माध्यम से वहां पर ये नेटवर्क बिल्ड हो रहा था। और ये था कि इन ब्रिज पर केवल एक ही बार आप गुजर सकते हैं, और उस तरह से इसको ही हम बाद में जो है ग्राफ थ्योरी का हम बेस मानते हैं। और मैम ने यूलर का जिक्र किया, मैम नेक्स्ट स्लाइड। यूलर का जिक्र किया, जो फेमस मैथमेटिशियन 1736 में उन्होंने कहा कि ये ऐसी एक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको शायद हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री या किसी इनसे हम सॉल्व शायद ही नहीं कर पाएंगे, या उसमें अलजेब्रा या ज्योमेट्री से हम इसमें ज्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन इसको फिर भी हमको जानना जरूरी है, इस ग्राफ थ्योरी को, या इन ब्रिजेस की जो बेसिकली इसका जो काम है, इसको हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम जरूर आ रही है, इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर हो रहा है। तो ये यूलर जो मास्टर माने जाते हैं, उनका भी ये मानना था, जो शायद ज्योमेट्री अलजेब्रा के माध्यम से उतना जल्दी हम वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। यस मैम। Okay, so how Euler tried to solve the problem? This is the picture of the city. So in general, when we have a mathematical problem to solve, what we do is to eliminate all the information that are not important, in the sense that they don't help to understand the problem and find a solution. In this case, for example, what we are interested in is the bridges, and which part of the cities they are connecting. So we don't care about the buildings, the morphology of the city, the area, so how big it is, or the exact location of some elements. So we just delete all these things. What we are interested in understand how many parts of the city have to be connected. I said 3, but it's 4, sorry, A, B, C, D. We indicated that this part of the city. And
how many ways to connect them there are. So how many bridges connect each part. We can still simplify this representation using network. Indeed, as I said, we don't care how large is part A or part B. We can represent these 4 parts of the city as nodes, because the only thing that we want to understand is how many bridges connecting them. And we can represent each bridge as a line, so exactly the link that I introduced before. So now we have a network, and the problem is we want to go to each part of the city, traversing only once each of the 7 bridges. This is the point. This is a nice game that one can try to do, and I'm just showing this. You have a link, the possibility to find the link, and you can try. This is the standard representation of the bridge, the Koenigs bridge problem, and you can do something like this, no? Try to understand if there is a path. Here, for example, I just stopped because I have no possibility to arrive in this area, to traverse this bridge without coming back to the same bridge, this or this. So I can delay it and start again. And you find also other kind of cities, changing the number of bridges and the number of the part of the city to connect. So I think this is funny, but it's also interesting because this will help to understand the solution. And what is the solution? Of course, the only thing that we can do is to try by hand to draw this. But imagine a bigger cities where we have not only 4 nodes, but 10, 11, and a lot of links. As you can understand, it's not easy to try by hand all possible paths. Indeed, there is a solution that we can find very fast in just looking at the properties of the nodes. Which property? We can introduce a quantity which is called degree, which is simply the number of links that touch each node. So for example, in this picture, node A has a degree equal to 3. Node B has a degree equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5, the number of links touching. And the solution that Euler found is a general solution and regard exactly the degree. What he say that a graph can be traversed if and only if all its nodes have an even degree, or exactly 2 nodes have an odd degree. Okay, and specifically in the case when you have just 2 odd degree, you should start by one of these 2 and you will finish in the other one. So this is this is the list of degree of our network, and as you can see, it's not possible to solve, because we should have all even or only 2 odd, but in this case all degree are odds. So this problem is not possible to be solved. So there is no path that allow to touch all cities and passes only once through all bridges. तो अब हम थोड़ा और उसके डीप में जा रहे हैं, कॉनिग्सबर्ग ब्रिजेस का ही एक एग्जांपल लेके। तो जैसे मैम ने बताया कि वो जो शहर है, उस शहर में जैसे हम देखें कि कुछ पार्ट्स है जिनको ये ब्रिजेस जोड़ते हैं। मैम, could we go to before 3 slides, like, yeah, okay. तो ये जो ब्रिजेस आप देख रहे हैं, ये शहर के उन पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम हम ये जाने कि इस बेसिकली हम इसको हमारा जो टास्क है बेसिकली वो है कि हमको एक ही बार इन ब्रिज को क्रॉस करना है, एक किसी भी
सिटी के पार्ट में पहुंचने के लिए, यानी शहर के इन भागों में पहुंचने के लिए हर एक ब्रिज में केवल एक ही बार आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैम ने बहुत अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली उसमें बताया कि जैसे उस पार्ट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी सी और डी, ऐसे 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, और उनके बीच में जो ब्रिजेस है या उनको कनेक्ट करने वाले ब्रिजेस है उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं ए बी सी डी, ये नोड्स हो गए। कोई भी शहर का पार्ट ये हो गया है नोड, और जो उनको कनेक्टिंग लाइन है वो उनके बीच के ब्रिजेस है। ठीक है, अब मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब टास्क ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपको अ, एक ही, जिसको बोलते हैं ना, एक जैसे ए बी सी डी, इन भागों में आपको जाने के लिए कब आपको, अगर एक पूरी टास्क दे दी जाए, उस टास्क में आपको बोला जाएगा कि ए से समझो आप सी तक वाया बी या वाया डी या ऐसा एक घूम के आप जाइए, तो वो, और उसमें भी ऐसा टास्क रहेगा कि आपको सिर्फ एक ही बार एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़े। तो मैम ने एक बेसिकली एक गेम दिखाया, उसमें ये टास्क आपको एक थोड़ा सा एक मजेदार तरीके से आप ये करते हैं। लेकिन यूलर जो है इस चीज को एक डिग्री के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिग्री का मतलब क्या है? ये जो नोड्स है, जैसे ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, तो इन इन इनसे कितने नेटवर्क या कितनी लाइनें जुड़ी है उससे डिग्री मानी जाती है। जैसे आप देखिए बी बी से जुड़ी है 1 2 3 4 5 लाइनें, तो बी की डिग्री हुई 5। ए से जुड़ी है 3 लाइनें, यानी ए की डिग्री है 3। सी से जुड़ी है 3 लाइनें, यानी 3। और डी से भी जुड़ी है 3 लाइनें, यानी 3 ब्रिजेस। तो यूलर का ये बोलना है कि एक ग्राफ जो है उसको ट्रैवर्स तभी किया जा सकता है जब उनकी सबकी डिग्री, सभी नोड्स की डिग्री ये तो इवन हो, ठीक है, या फिर कम से कम 2 नोड्स जो है उनकी डिग्री ऑड हो। कम से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 2 नोड्स ऐसे हो जिनकी डिग्री ऑड हो, या तो सारों की डिग्री इवन हो, या 2 नोड्स की डिग्री ऑड हो। तो to traverse a possible graph with 2 odd degree nodes, one must start at one of them and will end at another. तो जो ऑड डिग्री वाला रहेगा उसमें क्या होगा, बाकी जो इवन वाले हैं वहां पे नहीं, स्टार्ट इन ऑड वालों से ही होगा और दूसरे ऑड पे ही खत्म होगा। तो ये यूलर ने 1741 में ये थ्योरी बताई थी। अब इस माध्यम से जब हम देखेंगे तो आगे और चीजें हमको पता चलेगी। यस मैम। Okay. So if we understand the mechanism, so the mechanism is that each node should have all nodes even degree, or just two, only two odd. Because the point is that if you go through a bridge from A to B, let's say, and you don't have to traverse it again. So the only possibility is that you have a even number of links touching that node, because you need to arrive in A from one node, from one bridge, and to exiting from the other. This is the only possibility to not traverse the same bridge again. With only two nodes with odd degree, you can have the possibility to enter, exiting, and entering from another one. But of course, you have to start from the node with odd degree and arrive to the other only node with odd degree. So we can ask, this problem is not solvable, okay? But it's possible to solve it if we just add a bridge. The answer is yes, because adding a bridge has a double effect. It increases
the degree of two nodes. For example, I added this between A and D, but it's the same whatever you place it, because the effect is to increase the degree of one unit. And so now you have only two nodes with odd degree. So the problem is solvable, but you have to start in A and arrive in D, or vice versa. It's possible to solve the problem now removing a bridge. The answer is again yes. Whatever bridge you remove, the effect is double. You reduce by 1 unit the degree of two nodes. And so now again you have only two nodes with odd degree, so the problem is solvable, but you have to start in B and arrive in C, or vice versa. If you try to solve these games on the link that I show you before, okay, the first case, of course, is the problem of bridges, and we have seen it's not solvable, while the other two are solvable. Why? Because if you try to represent again this as network, because if you look in this way, maybe this is not so intuitive, but if you represent them as network, you discover again that you have only two nodes with odd degrees, and so the two problems are solvable. We consider this as the birth of the topology, which is a way to call graph theory that is called, translated as the science of places, not intended as geographical places, but places in terms of the position that they occupy in a network in terms of connections. And so, as I said before, the graph theory has a lot of application in different fields. I just showed some of them. Okay, I stop here. तो मुद्दा ये था कि एक सिटी के कुछ इन 4 नोड्स हैं और उनके बीच के ब्रिज को केवल एक ही बार क्रॉस करने की वो टास्क है। तो अगर उसका सोल्यूशन हम देखें तो मैम ने 2 सोल्यूशन बताए कि क्या एक और एक्स्ट्रा ब्रिज ऐड करके हम सोल्यूशन पा सकते हैं। तो हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर जो पहले चारों ऑड डिग्री के नोड्स थे, अब हम एक ब्रिज ऐड करके क्या पा रहे हैं? हम पा रहे हैं कि केवल बी और सी जो है वो ऑड रह रहे हैं और ए और डी अब इवन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्यूशन पाना इजी है। लेकिन जब आपको पता है जब ऑड्स आ जाते हैं तो शुरू एक ऑड से करना होता है, इवन से या उन ब्रिजेस से गुजर के, और आखिर जो करना होता है वो ऑड में करना है। और दूसरा सोल्यूशन है कैन इट बी सॉल्व बाय रिमूविंग द ब्रिज? तो उसका भी आंसर है यस। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें बी और सी का जो बीच का ब्रिज है उसको हम रिमूव कर देंगे और हम वापस पाते हैं कि बी और सी जो है ये इवन हो जाएंगे, ए और डी जो है ये ऑड, और हमको फिर से ये सोल्यूशन मिल पाएगा कि हम यूलर के हिसाब से जो है टू ऑड डिग्री का जो बेसिक सिद्धांत है उस पर हम आते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ थ्योरी बेसिकली जिस पर से ये यानी ये क्यों जरूरी हो गया है कि ये इस तरीके के नेटवर्क को स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो ये जैसे मैम ने बताया जो प्रीवियस गेम था उसमें जब ब्रिजेस हमने रिमूव नहीं किए थे या हमने वो हो गया है कि हम इस गेम को हम सॉल्व कर सकते, एक ही बार क्रॉस करके हम पहुंच सकते हैं अपने डेरे पर या जो है ऑड नोड्स पर। नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम जो बेसिकली जो ग्राफ थ्योरी है टोपोलॉजी उसके ऊपर हमने अभी बताया, और वही है वो जो मैम ने अभी जो डिस्कस किया बेसिकली जो इनमें जो नोड जो है उनकी बेसिकली उनकी पोजीशन कितनी इम्पोर्टेंट है और उन नोड्स का ही खेल है, उनकी डिग्री का ये खेल है
उन तक कितने कनेक्शंस आते हैं, उसका ही एक खेल है कि हम ग्राफ थ्योरी को हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो मैम ने बताया कि नेक्स्ट स्लाइड मैम, मैम ने बताया ग्राफ थ्योरी का एप्लीकेशन कितनी अलग अलग फील्ड में है। आपके सामने ये स्लाइड है। मेडिसिन में जैसे हम अभी हमने हमारे सामने कोविड जैसी स्थिति आई थी, तो हमने देखा है मेडिसिन में है, न्यूरो साइंसेस में है, जहाँ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में जो नेटवर्क होते हैं उसको रिलेटेड है। सोशल साइंसेस हमारे सोशल बायोलॉजी में जो है, इकोनॉमिक्स में है जहाँ पे फाइनेंस और ट्रेड इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर साइंसेस में, इंजीनियरिंग में हम इसका असर या इसका इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन। Okay, so this example, besides representing the birth of the topology, so that's why I mention it, I think it helped to understand how a complex problem like this can be solved in a very easy way using the network representation of the complex system that in this case is a city with a few nodes and few links. A similar problem with just a different perspective is it's well known in the field, it's the traveling salesman problem. So while in the bridges we asked if it was possible to traverse all bridges only once, here we have cities connected by, let's say, routes, but it can be applied to every kind of connection we can imagine among cities. And we ask if it's possible to visit all not it's possible, sorry, how can we find the shortest path to visit all cities in one day, in amount of time? So it's called a salesman problem because imagine a deliver service well known like Amazon or something like that, that has to bring some packets to several cities in the day, and so has to find the best route in order to save money and time. So it's not a problem that, far from reality, as you can imagine. It's a real problem that this delivery company has to face every day. We have now, to represent this problem, a new ingredient, because in order to find a shortest path, we have to wait in somehow this path. Indeed, till now, we have just looked at what is called a binary network, because we just had nodes and connections, the links. Now we introduce a new quantity, which is called exactly weight, and represents a number associated to the specific link. In this case, in this figure that I'm showing, imagine that those nodes are cities. The connection are routes. We don't care in their representation the shape, the thickness, the color, but the number with the associated to each link represents the geographical distance. Now, we are not interested in the order of magnitude. It's just to make the number comparable in order that I can say that the route between A and B is longer than the route between A and C. Now, what is the problem? Let's imagine that we have this this salesman that has to visit all these cities and has to find the shortest route. Of course, as before, you can try to do this by hand. And in this sense, I'm showing you this other game that unfortunately has been developed only for, I think, Africa, Italy, and Germany, so I choose Italy. Here you can choose the number of cities, let's say 25 because 30, sorry, because 50 is too much. You start the game and what it asks, I'm not doing it now because it's long, but what you can do is you choose the starting node, and it's also nice because when you go to a point, you will see the name of the cities. For example, this is where I'm from, Bari.
but I live here in Siena, close to this area, while Turin is here, just to show you. And so you can you choose one city and you try to connect all these cities, trying to find the shortest route. Of course, and you have to end up to the starting node. Of course, you want to do this and then, like, I don't know, arrive here and come back here. This is a waste of time and money. So you have to find the shortest route. When you arrive again in the first city, after you have touched all, you can find here the solution, and it will tell you if this is the best route or not, and it will show you the best route. So it's just, again, a game to practice with this. But why this game? Because I want to convince you that the problem is very, very hard to be solved. Why? Let's imagine that you have to do this with just 3 cities. You need to build a decision tree. Why? Because first of all, you have to choose your starting city. So you can choose among 3 cities. When you have chosen the first city, you have to choose the second step among the 2 remaining cities, and then, of course, the third. So starting with 3 cities, you end up with 6 possibilities. Okay, what happens if you increase the number of cities? You see that just moving from 3 cities to 4 cities, the number of choices is 4 times bigger. Going from 4 to 5, you see that now we have 120 possibilities. So increasing just of a few units the number of cities increases exponentially the number of possible paths. So it's not possible to be solved by hand. तो इसका जैसे इसके एप्लीकेशंस पे हम अब जा रहे हैं, और जैसे मैम ने बताया कि वेरियस एप्लीकेशन है, लेकिन जो एक बहुत पॉपुलर इसका एप्लीकेशन था और डिस्कस होता है वो ट्रैवलिंग सेल्स एंड प्रॉब्लम। एक इमेजिन करिए, एक सेल्समैन है, वो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी कुछ शहरों में वो क्लाइंट से डील करता है। अब ये प्रॉब्लम कब आती है? जब उसके पास, देखिए, हमको समय बचाना है बेसिकली। तो समय बचाने के लिए बेसिकली हम उन क्लाइंट्स से शॉर्टेस्ट वे में कैसे पहुंचे, उनसे मिलकर, और हम वापस कैसे आए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी इन 4 शहर में उसको जाना है, 4 शहर में अलग अलग नंबर्स के क्लाइंट्स है उसके पास, सेल्समैन के पास। तो उसको किस तरह सॉल्व करना। अब यहाँ हमने देखा है, अभी तक हम नोड और लिंक, ये 2 ही हमने टर्म्स हमने सुनी है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है वेट। तो ये वेट इसलिए भी ऐड होते हैं क्योंकि हमको अब टाइम, या जिसको हम बोलते हैं उसका जो उसकी शॉर्टेस्ट रूट पर हमको, या शॉर्टेस्ट समय में हमको रीच करना। तो मैम ने यहाँ पे जो बताया, ये जो सिटीज हैं उनके बीच में लिंक्स है। लिंक्स क्या है? रोड है। लेकिन जो वेट है, वेट का मतलब है उनका डिस्टेंस है। तो हम देख रहे हैं कि शहरों के बीच के जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, और उनका जो मिला जुला, या उनके बीच के जो ट्रैवल, उसको सेल्समैन को इस तरह करना है कि वो कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, और सबसे कम समय में, एक बोलते मिले जुले एवरेजली सबसे कम समय में वो वापस आए। तो इस तरह के गेम्स जो है वो मैम ने बताए हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे इटली का मैम ने बताया कि किस तरह इटली में वो एक शहर में रहती है, और आप वो गेम, आपको एक लिंक दी गई है यहाँ पर, उसमें प्ले करिए। तो आप अपना शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करिए, और आप उसमें उन शहर में जाकर वापस आने का शॉर्टेस्ट रूट तय करें। तो अब और फिर आप देख सकते हैं उसका क्लिक करके कि ये आपका शॉर्टेस्ट रूट था, या इसके अलावा भी शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है। अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन
ये उतना सिंपल नहीं है। तो मैम ने जैसे बताया कि जैसे शहरों की तादाद हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसके पॉसिबल पार्ट्स जो है वो अब बढ़ते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सिटीज जो है एक तरह से हम बढ़ाएंगे। जैसे एक ही शहर है तो आप देखिए कि एक ही पाथ है। दो शहर है तो हम देख रहे हैं कि दो, लेकिन जब तीन हो रहा है तो छह पॉसिबल पाथ्स हो गए, चार हो रहे हैं तो 24 पॉसिबल पाथ हो गए, 5 हो रहा है। इस तरह सब एक्सपोनेंशियली जब जैसे जैसे आप शहर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली ये पॉसिबल पाथ्स बढ़ेंगे। तो द प्रॉब्लम विल बी मोर कॉम्प्लेक्स इफ द सिटीज आर मोर, इफ द नोड्स आर मोर। और उसमें और बाहर जाता है वेट का, यानी उनके बीच के डिस्टेंस इसमें। During the year, there were some competitions invented from some companies, like, for example, in this case is a Procter & Gamble contest. Procter & Gamble is the producer of some soaps, dishes, wash dishes, so far and so on. And they asked to people to find the shortest route between 33 cities. The number of possible paths is these two line numbers that I don't know how to read, and the time to calculate this number is on average 28 followed by 18 zeros years. This is a huge number if you imagine that the age Earth is just 14 followed by 9 zeros. Of course, there were some winners of these competitions and also the other that I'm showing you, because it's possible to, for sure, eliminate some path from the beginning, for example, path connecting in the first two steps cities that are far from the other. So one can try to find the solution, avoiding for sure the not suggested path. And for example, following the same idea, in 1987, there were some researchers found the optimal path among 666 world places of interest. In 2004, there was found a path among almost 25,000 cities in Sweden. What I can say is this is still an open problem, because in mathematics, when you want to solve a problem, you cannot go by attempts, or you cannot solve just in specific situation. You have to find a general solution, so to prove it, or to find a clear counterexample showing that the solution does not exist. For this reason, this is one of the millennium problems for which the Clay Mathematics Institute of Cambridge offers $1 million to find a solution. The only thing that we can say till now, in 2006, there was the last optimal route, but again, very specific, among around 8,500 nodes. Okay, I stop here. तो इस पर काम हुआ है बेसिकली। और जैसे मैम ने बताया कि सेल्समैन ड्रिवन या मार्केट के लिए ज्यादा यूज हुआ, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो एफएमसीजी कंपनी हम भी जानते हैं, उसने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। उसमें अमेरिका की 33 सिटीज के बीच में ऑप्टिमल डिस्टेंस या ऑप्टिमल वे में सबसे शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करने का, पाथ का एक कंपटीशन रखा था, और जिसमें कुछ लोग जीते भी थे। लेकिन आप इसका देखिए कि इसमें इस किस्म के पॉसिबल पाथ्स जो है, आप देखिए कितना उनका नंबर था। और इन पाथ्स को इवेल्युएट करने का समय भी आप देखिए कि 28 गुना 10⁻18 वर्षों का इसका समय है। और इतना समय तो हमारी अभी उतने है नहीं। इसके बाद में 87 में ऐसा ही एक वो हुआ था, जहाँ पे 666 इम्पोर्टेंट शहर दुनिया के, उनको ऑप्टिमली उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का चलन चला था। और ऐसे ही स्वीडन में 2004 में ऑप्टिमल पाथ का
एक अटेम्प्ट हुआ था, जिसका जो है 24.97 उसका ये नोड्स हमको मिले थे। अभी द क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट है कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स का, वो $1 मिलियन ऑफर कर रहा है कि कोई एक जनरल प्रोसीजर वो इजाद करे और बताए कि इस प्रॉब्लम को किस तरह एक जनरलाइज वे से एक प्रॉपर इसका एक जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल या किसका कोई एल्गोरिदम अगर वो निकाल पाए तो मोस्ट रिसेंट रिजल्ट 2006 में 85.900 नोड्स का 2006 में ऑप्टिमल रूट निकाला गया। लेकिन अभी ये ओपन है, कोई एक जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक प्रोसीजर के लिए ये खुला है ऑफर। या Okay, the only thing that we know is that we can try to solve this problem, numerically. What does it mean? Here I'm showing on the top and on the bottom the results of two numerical simulations that try to find the best route between just 7 nodes. And on the right, they update the path as they find the shortest one. So they continue in the repeated way. What you can see is that on the top you have the evaluation number, so the all paths that have been evaluated, so they are 360. And then it start again, and on the bottom the same. What you can see is that in the bottom you have just 1/3 of evaluation than above. Why? Because in the brute force method on the top, essentially what the algorithm do is to explore all possible paths, so by hand, of course, algorithmically, numerically. In the branch and bound method, the algorithm follows something more intelligent, as I said before. So it starts from a node and he remove all paths that for sure are not the best. So it just looks at the second step, which is the best solution. Then he go ahead and for the third step, removing the not efficient path, and so far and so on, and repeat changing the starting nodes. So it's much faster, but in any case, it's numerically, so it's not theoretical, so you don't have some proof. The interesting aspect is that it seems that who has solved this problem are ants and bees. Especially ants, what they do when they have to when they search for food and they find food, they have some specific ants that are explorers. So the first one goes and comes back. The other one do the same, but each step they improve the path, reducing the distance. How? Practically they produce some pheromones, some substance that can be understand in some way that from the other ants. And so the path which has more of this substance is the most traversed one. And so it's the one that ensures the best solution. This is just to give an idea. The point is that scientists have proved to implement something similar, and for the same problem that I have showed you before, just 7 evaluation are enough. So 7 ants exploring the path and releasing these pheromones. In the pheromones map, you can see that the thickest link is the one where these pheromones are more frequent, because this smell cannot be perceived from other ants after let's say few minutes. So it disappears if we don't find enough of it. So the scientists nowadays are trying to inspire their algorithm to this ant colony optimization
producing this ant colony optimization approach, and they are also observing bees that, following the same idea, moves from one flower to the other, find the best route. The application of this problem are very important because they relate transportation, logistics, the fiber optic deployment. So every time we need to build new infrastructures connecting some logistic hotspot points, it's important to employ something like this. The delivery optimization cost problem, but also, for example, is useful for the DNA sequencing, but also the optimization of celestial body image capture. So very different field that makes this problem very actual. Okay, I stop here. तो जैसे हम देखें कि अब इतना वास्ट उसके पॉसिबिलिटीज है, तो न्यूमेरिकली मैम ने पहले बताया कि किस तरह न्यूमेरिकली इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। एक है ब्रूट फोर्स मेथड और दूसरा है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रूट फोर्स मेथड में मैम ने बताया कि लगभग सभी पॉसिबल पाथ्स को इवेल्युएट किया जाता है और उसमें फिर बाद में ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो निकाली जाती है नोड्स के बीच है। लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है क्योंकि सभी पाथ को वो इवेल्युएट करता है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड जो है इट इज मोर एफिशिएंट इन द सेंस कि वो उन लंबे या इनएफिशिएंट पाथ्स को पहले ही रिमूव कर देता है और केवल एफिशिएंट एंड इम्पोर्टेंट पाथ्स को ही वो इवेल्युएशन के लिए यूज करता है। तो उससे जो है हमको न्यूमेरिकली तो भी एक बेहतर सॉल्यूशन या बेहतर ऑप्टिमल हमको डिस्टेंस मिलता है। अब मैम उसके बाद में जाती है कि न्यूमेरिकली तो ये हो गया, लेकिन हमारे बायो वर्ल्ड में इसका सोल्यूशन हमको एंट्स यानी चींटियों ने दिखाया, चींटियां और बीज ने। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक सोचिए, एक उसका जो सोल्यूशन है वो एक एंट्स की जो एंट्स अपना एक कॉलोनी फॉर्म करने के लिए या उनके फूड के लिए या किसी चीज के लिए वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से काम करती है, उसका बेस लेकर ये फाइंड किया और उसको मैम ने बोला है एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन उसका नाम है। और इसमें हम देखें कि फेरोमोन्स जो उनका एक केमिकल एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे एक लीडर है वो पहले जाके आता है उस पाथ से, फिर दूसरा जाता है दूसरे पाथ से, और इस तरह से क्या हो जाता है कि एक जगह पहुंचने के या जाने के माध्यम जो है वो इस तरीके से फेरोमोन्स जो है माध्यम से, फेरोमोन्स के माध्यम से एंड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। और यहाँ पे मैम ने एक उनका मैप वहाँ पे प्लॉट करके दिखाया है कि कैसे फेरोमोन के माध्यम से चींटियां जो है, उनकी कॉलोनी जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ ऑप्टिमाइज करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी शॉर्टर पाथ होते हैं वो जहाँ पे ज्यादा फेरोमोन यानी ज्यादा वहां पर आवागमन उन चींटियों का होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा एंट्स जो है वो सबसे अच्छे या सबसे एफिशिएंट रूट पे ही काम करती है। तो यही तरीका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए उपयोग में जब लाया जाता है तो हम उन पे उसके एप्लीकेशन हम शायद और ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो मैम ने वैसे बताया कि इसके एप्लीकेशंस जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो ट्रांसपोर्टेशंस, जिसको हम अभी जो लॉजिस्टिक्स है वहाँ पर, फाइबर ऑप्टिकल डिप्लॉयमेंट में है, इंटीरियर सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके आईसी जो होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इमेज में जो आपके स्पेस की इमेजेस होती है, और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसी जगहों में भी इसके हम एप्लीकेशंस देख पाते हैं। Okay, another interesting
thing that I want to show you to stress how networks are, I mean, we are in the networks in the sense that we are all strictly related, and so networks can be a useful tool to understand our world, is the property of a small world, which is represents the fact that every two people in the world are connected through a very short number of steps. These things was found already in 1967, so when internet, social networks were not there, by Milgram's experiment. What he did is he prepared a number of letters. He sent this letter to people in Nebraska and in Kansas, and he asked to people receiving this letter to send or either to people in Boston if they knew them, or to send to some friends that according to them could know someone in Boston. So the idea is to count how many steps were necessary for a letter, so a physical letter, to move from Nebraska, Kansas till to Boston area. And what he found is that on average just 6 steps were necessary to connect unknown people. Of course, he didn't try to set up this experiment in the whole world, because in 1967 it was very hard. But more recently, some researchers tried to repeat this on social networks. And of course, as you can see, in bold, there is the average number of steps required to connect two unknown people on Facebook. And this is just half of the 6 steps found by Milgrams. This is to stress that, as you can imagine, we are a very, very connected system, and the effect of an event far from us can have strong effect on our world and our life due to this kind of connections that can be different. So, as I said, they can be physical connection, they can be economic connection, social connection, political connections. So the network effect is very especially nowadays. I skip this and I stop and then I start here. So I'm just showing this. I stop here. Okay. अब हम जिस दुनिया में रहते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारे बीच का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का मेथड इजाद हुआ। अब तो जैसे सोशल मीडिया है, सब है, लेकिन 1967 में मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट मैम ने बताया कि किस तरह एक अनजान व्यक्ति को या अनजान व्यक्ति से कनेक्ट करना। और एक जैसे मिलग्राम ने देखा कि बेसिकली 6 शहरों से कनेक्ट करने की उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें देखा कि नेब्रास्का से शुरू करके जो सबसे लास्ट था वो आई गेस न्यूयॉर्क तक यहाँ पर उन्होंने लेटर्स भेजने का वो किया। तो उसमें भी कैसा था कि एक शहर से दूसरे शहर एक लेटर जाएगा, फिर उनको वो बोला जाएगी आप नेक्स्ट किसी आगे के शहर में किसी भी अनजान व्यक्ति को आप दूसरा लेटर भेजो, फिर उसको बोला जाएगा कि उसके आगे के एक शहर में तीसरा आप लेटर भेजें। तो ऐसे जब हम नेटवर्क में पाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट वहां पर हुआ था, और इस तरह से पाया गया किस तरह शॉर्टेस्ट समय में कितने समय में या कितने लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया। और अभी हम देखते हैं कि 2011 में भी इसका एक बार फेसबुक में चलन देखा गया, और उसमें भी ये एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया। 2016 में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया। मैम इसके एग्जांपल्स और आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले ही जान ले कि ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है या इस किस्म से आगे बढ़ने का जो
माध्यम है। ये नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स जो है, बेसिक्स की तरफ हम आपको हम उसको उसकी तरफ आपको ले जा रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स हमने कई फिल्मों में और कई जगह पर हमने देखे भी है कि किस तरह एक नेटवर्क जो है वो बिल्ड होता है, और डिग्रीज जो है बेसिकली डिग्रीज के माध्यम से ही या नोट्स के माध्यम से ही ये बिल्ड हो रहा है। ये सब Okay, I want to conclude with some examples, again to highlight the importance of networks and the role of nodes. So I'm showing this, this is my Facebook network. So nodes are my friends, and links are the connection between them if they are also friends of each other. I want to highlight this, this representation is not decided by me when I use the packages to show networks. Is not a geographical meaning, but this representation, this layout is simply given by the number of connections. It means that nodes that have several common relationships tend to be close to each other. So the fact that you are observing these clusters depends on the fact that within these clusters, nodes are sharing a lot of connections. Why I'm stressing this? Because I want to show how these clusters exactly represents some stages of my life, because I moved a lot during my for my job. And so, for example, this is my family. As I said before, I was born in the south of Italy, close to Bari. My city is called Palo, because now you will see. So this is my family, and those are my friends from the city where I was born. So you see that there is an overlap between the two sets that are close enough because they are really geographically close. Then here I have some high school friends that you see, they stay peripheral because they are friends that I don't see anymore. And so there is no possibility to create clusters with them. So they just lie in the periphery. Here there are friends from Bari, because I was born in a small city, but then I moved to Bari, which is the big city, for the university. So I have some university friends and other universities that again have an overlap and remain as a cluster close to my birth city. Then I moved in Tuscany, so I went in Pisa, and then you can find a cluster that is separated from the rest, but nevertheless connected through few links to my family. Because you can imagine my mother visiting me and making Facebook connection with my friends. This is exactly what happened. So those are Pisa friends that form another clusters, because I had two separated group of friends, one related to the colleagues of the PhD and the other connected to my hobby, my external activities. And then there is also another group connected but separated, because these two are two different clusters representing two different hobbies that I had in that period. Then I moved to France, in Marseille, and those are the connection of colleagues and friends that are now related to Pisa friends, because my PhD topics were of course connected, because my work was in academy. So those friends are also friend each other because they are colleagues doing the same activity. During this, when I came back from France, I moved to Tuscany, but in another city. And you see, I have this cluster far from each other, from everything else, because it's really strictly related to that period where my first daughter was born. And so it's related to this. And then I didn't have any contact anymore to this because I moved to Siena. Here in these small triangles, you can also observe my Leiden's friend that I had the opportunity to create this friendship during my PhD visiting, that have some connection with Tuscany, because I found, as usual, Italians
And so from Florence, and so at the end there were born some connection, and then now I'm living in Siena, and this is my actual community. Why I show this? I show this because, as I said before, starting from the layout without making any a priori assumption, but just letting the data talk for me, I have this representation that can help to understand also specific phase of my life. But what I want to stress is how these help to understand the importance that some nodes have. For example, there are some nodes that I'm indicated with this black circle that have high degree centrality. What does it mean? They have a lot of connections. They are hub in my network. They become fundamental to spread information, to keep in contact these clusters inside. But there are also other kind of nodes like these surrounded by red circles that have high betweenness centrality. What is betweenness centrality? While the degree just count the number of links, so is a local measure of centrality, betweenness looks at all shortest path connecting any two nodes in the networks. It means that these nodes works as bridges, keeping a connection among clusters that maybe could be isolated without these nodes. And indeed, if you go inside in details, you see that this helps to connect clusters that otherwise are far from each other. For example, this one connected Pisa, Bari, and also France, because it's a very close friends that started to create relations with also my friends. This is an example to highlight how the network can help to understand the role of nodes that we could not identify if we don't use a network representation, because we miss the higher order relation. I just conclude with the examples because, or if you prefer, I can stop here and then I'm showing just random examples. Go ahead. Okay. Okay, so just these few examples is to show how different relation, different shapes. This is, for example, a teen romance in an American high school. So teenager meeting, so pink are woman and blue are men. And this is just to show how, given the nature of a human relationship, we cannot expect some structures in this way, but very specific with some chains, some few stars, because stars in this setting means, for example, a girl meeting with many boys. Okay, this can be, but in general is not like this. So in this case, the kind of relation shape the structure. This is the London Tube, and this is, for example, a network whose shape depends on physical constraints, because when you build tubes, of course, you have to respect some geographical constraints that you have. For the same reason, you have a very specific structure for example, the transportation clusters and routes in airports. And finally, I want to show this, which is a 3D realization that I did with the connection among brain areas. Each color has a specific function, and the connection relate nodes that have the same reaction to external stimuli. And I conclude here. So I come back to this. तो मैम ने सबसे लास्ट पोर्शन में बेसिकली ये बताया कि जैसे नोड्स का या डिग्री का जो खेल है उस पर ही आते हुए मैम ने अपने खुद का एक पर्सनल अपना एक फेसबुक का नेटवर्क का एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उनके लाइफ के अलग अलग दौरों में या अलग अलग स्टेजेस में ये क्लस्टर्स बने हुए आप देखते हैं। तो मैम ने जैसे देखिए वहां जहाँ से जन्म हुआ था वहां का एक क्लस्टर है, जहाँ ग्रेजुएशन किया था वहां का एक क्लस्टर है,
फिर उन्होंने जहाँ पीएचडी की थी वहाँ, जहाँ वर्क कर रही है वहाँ, तो ये क्लस्टर्स बने। अब मैम ने इन क्लस्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने फेसबुक नेटवर्क के थ्रू प्रॉपरली इस नेटवर्क ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट किया है। और अलग अलग इन और इन क्लस्टर्स को जोड़ने वाले भी कुछ लोग हैं जो इन दो क्लस्टर्स को भी जोड़ रहे हैं। वो मैम के भी दोस्त हैं और शायद उन दो क्लस्टर्स के भी बीच के लोग हैं। तो यहाँ सेंट्रलिटी जो है दो किस्म की मैम ने बताई। दो किस्म की सेंट्रलिटी, एक है क्लस्टर के बीच की जो सेंट्रलिटी है, जिसको मैम ने बोला है डिग्री सेंट्रलिटी। तो ये है कि हर एक क्लस्टर का जो एक फोकल पॉइंट है, वो उसका नोड है, वो सेंट्रलिटी तय करता है उस क्लस्टर की या उस स्पेसिफिक ग्रुप की जो एक जगह से ज्यादा जुड़े हैं। और दूसरा एक मैम ने बताया कि बिटवीन सेंट्रलिटी, यानी दो क्लस्टर्स को जोड़ने वाले ऐसे नोड्स जिनका शायद खुद का उतना क्लस्टर नहीं होगा, लेकिन वो दो क्लस्टर के बीचों बीच वो एक ऐसे नोड्स हैं जो वो उन दो क्लस्टर्स को जोड़ते हैं या उनके बीच के प्रॉपर नोड, बीच के नोड बनते हैं। तो ये बेसिकली मैम ने अपनी ही जर्नी में किस तरह से ये लोग मिले और किस तरह से ये लोग उनसे जुड़े, उसके ऊपर में मैम ने बताया कि ये नेटवर्क इस तरह तैयार हुआ है। और इस माध्यम से कितनी चीजें हम अपने बारे, अपनी जर्नी की, अपनी लाइफ जर्नी की हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन यही चीजें जब हम देखते हैं लाइफ, अभी जो इर्द गिर्द की चीजें हैं उनमें जिस तरह की कनेक्टिविटी स्थापित हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन बिजनेसेस, बिकॉज ऑफ सर्टन कम्युनिकेशंस, उसको मैंने एक तरीके से बताया है कि नेटवर्क्स जो है ये हर जगह मौजूद है। और इसका जो स्टडी है, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं हमको एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ ले जाती है। मैम ने बाद में और एग्जांपल्स भी दिए, जैसे मैम नेक्स्ट स्लाइड, कि अमेरिकन हाई स्कूल में जैसे टीन रोमांस के ऊपर में एक वो बनाया था, मैम ने रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा नेक्स्ट में ये बताया है कि किस तरह लंदन का जो ये है ट्यूब्स है, जो वहाँ की सो कॉल्ड मेट्रो या जो रेलवे का ये नेटवर्क है, तो ये भी विकसित होता है। ये धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से, जहाँ कम्यूटर्स ज्यादा होते हैं, जो सिटी के प्लेसेस है, वहाँ वहाँ पे प्रॉपरली वो ट्यूब ले जाएं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो फ्लाइट का नेटवर्क है दुनिया भर का, ये भी हम देखते हैं कि किस तरह ये क्लस्टर्स फॉर्म है। और इसमें भी बिटवीननेस वाली डिग्री है, और यहाँ पे क्लस्टर डिग्री सेंट्रलिटी भी है, और बिटवीननेस सेंट्रलिटी भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख पाते हैं। तो ये नेटवर्क थ्योरी का एक हम देखते हैं एप्लीकेशन जो है वो कितना वास्ट है, और किस तरीके से हम इसको देखते हैं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म अब हमारी ब्रेन के नेटवर्क, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट या जिसको हम ब्रेन के जो साइंटिस्ट है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन नोट्स का जो जंजाल है, इन नोट्स का जो फ्रेमवर्क है, उसको जानने से हम कितनी चीजें आसान हम लोगों के लिए कर पाते हैं। तो ये आज का सेशन रहा। और if you have any questions about today's lecture, you are free to ask. Uh, both our joinees on YouTube and on Zoom, they can ask the questions. Uh, YouTube attendees can write their questions on the YouTube chat box. Dada, any questions? I see a Not on question in YouTube, the. but yeah, Kajal is asking, how do network changes over time and what drives these changes? This is a great question, in the sense that this strongly depends on the network you are looking. There are some networks that are static by nature, because I don't know. Let's just imagine the network of routes among cities. They usually they don't change so often in time.
But imagine the network of contacts among people that really represents the journey of each node and its meetings over time, is the contacts, how many minutes or hours he stay with other people, and so far and so on. Indeed, for this kind of network, I didn't mention here this because it's another topic. It exists another subcategory which is called temporal networks, where you specifically study the emergence of structures when the number of nodes changes, because you can allow new node to arrive or node to disappear. If you imagine people, just imagine birth and death. And you can also imagine links disappearing and new links arriving. So this is in general if you want to study a network that changes over time. Different is if you want to induce some changes in your structure, for example, to study the resilience of a network, the reaction to an exogenous event. So there is not a unique answer to what drives network dynamics in the world. It depends on the specific systems. I hope to have answered. Thank you to you. Any questions on YouTube, Radha? No, not yet. So maybe, Rossana, maybe you could say a few words about your current interests, research interests in economics and maybe finance, and how they relate to networks, or what you discussed today. Yeah. Yes. As you saw, I don't know, from the presentation, maybe because I showed you the brain, I talked about epidemics. During my academic journey, I had several interests in the interdisciplinary field. So I moved from epidemiology to neuroscience, but I got my PhD in economics, so I started to work on complex system in economics, specifically in that case in the international trade network. So I studied the trade relationship, so export and imports among countries over time, and I studied how this shapes the networks. What I'm doing specifically now is more related to finance from one side. Practically, you have the time series of prices, and you can connect different assets are called, so different type of assets through the trend of these prices. So when one price goes up, another price goes down, or two prices move together, you can compute the correlation, no? So that relate this, and create the network of these correlations. It's not exactly correlation that we use because it's something that allow to have directionality. It's related to Markov process. And but just to give you an idea, we are able to create the network of these assets and to study why this is interesting. We want to study how these are related, and so how, for example, a crisis touching one of these nodes could affect the whole system, creating, as I said before, some cascade effect with some links disappearing, some nodes disappearing. We are doing this studying specifically recurrent sub-patterns. This is something that is studied in networks. So instead of just looking at the role of node, as I showed you in the presentation, you can study, for example, how many closed triangles you have. That means the presence of trust relationship between nodes. How this changes over time? Can they predict the arrival of a crisis, so give as an early warning signal? This is an example of what we can do. On the other side, I'm also interested in environmental economic, and so I'm studying things more related to emissions, related to international trade.
and environmental action. But this is completely different things because it's game theory on networks. So it's related to pro-environmental actions of people and how these can affect the environment in terms of cooperations. If you imagine cooperation as pro-social behaviors, you can interpret the standard game theory as an environmental, something as having an environmental effect. So yes, networks, always networks, but with economic subjects, let's say. Yeah. Thank you. And I guess actually we have actually crossed our time, and we took ma'am's important time, a lot of important time for ma'am's. So if there are any questions, you could ask on our Digital Nalanda's portal, and We don't have any nobody. questions on YouTube. Okay. Not yet. I think we should come to Subhat. Okay. So on behalf of Digital Nalanda, we thank Dr. Rossana for giving her precious time and sharing her expertise with us. And I'm sure our students and those who will be watching us on YouTube, they'll be they will have a great basically experience in this which actually this topic has been there around, but nobody has delved into such deeper insights into this. And I guess our students also have benefited from this. And also, I wanted to thanks Professor Dr. Subodh Patil for actually being the node between us and the experts, and always giving us his advice and properly and connecting with us and connecting experts with us. Also, thank you for all the students and those who have joined us on YouTube. And we will be meeting again with another expert in the Curiosity lecture series. So thank you so much, everyone. Thank you, Rossana. Thank you. Thank you so much. Rossana. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for the translation, for the invitation, it was a nice experience. See you next time. Finally, Rossana. Yeah. Bye, everyone. Bye. And thank you so much.